Hello children, in this lesson we are going learn about various type of birds. Firstly, tell me you know anything about birds? So tell me what is birds? You must have to seen various types of birds around us like peacock, parrot, owl and crow. So, in this lesson, we are going to learn various informations about birds. Let's start. Take out your EVS book and look at the page number 47. And your chapter name is Pretty Birds. Let's read. Birds fly in the sky. Birds आसमान में उड़ते हैं. Crow are clever birds. They are black and grey in color. जो क्रो होता है वो चालाक पक्षी होता है और उसका कलर ब्लैक और ग्रे होता है. This is a picture of crow. They have a beak and wings. ठीक है कि क्या कि जो पक्षी होते हैं उनकी बिक होती है, चोंच होती है और पंख होते हैं. Parrots have a red beak and green feather. Parrots के green feather होते हैं और red beak होती है. Okay, this is parrot. The peacock has colorful feather. Peacock के पास colorful पंख होते हैं, means रंग बिरंगे पंख होते हैं. This is a picture of a peacock. Peacock is our national bird. Swan and ducks swim in water. जो स्वान जो हंस होती हैं और बत्तख होती हैं वह पानी में तैरती हैं. The eagle is a big bird that lives on rocky cliffs. जो ईगल होती है, चील होती है, वो चट्टानों पर रहती है और ये एक बड़ा पक्षी होती है. So today we learn about various types of birds. You have to read this chapter again at home and learn birds' name also. Thank you and have a nice day.